This is Hunza, located in northern Pakistan. And this is Atabad Lake, the most beautiful lake of Hunza. And how it came into existence, I will share along you in next vlog. तो चलिए अताबाद को बोलते हैं खुदा हाफिज़ और बैठते हैं गाड़ी की छत पर ताकि कुदरत की तमाम रनाइयों को दिल से एंजॉय कर सकें। अताबाद झील से हुसैनी पॉइंट तक रोड फुल कारपेटेड है और इसके दोनों अतराफ में ऊंचे ऊंचे बंजर पहाड़ और सरसब्ज दरख्त बेहतरीन नज़ारा पेश करते हैं। 30 मिनट के बाद हम पहुंचे इस मकाम पर जो कि कहलाता है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वन, और यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई इन बच्चों से। इन बच्चों ने क्या मैसेज दिया है ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। हुसैनी विलेज से होते हुए 2 मिनट की मुसाफत के बाद हम पहुंचे हैं इस छोटे से टिकट घर पर, जहां से हमने 100 रुपये की टिकट ली और निकल पड़े हुसैनी ब्रिज का एडवेंचर करने। You have to climb down the long trekking hill to reach the adventure point. This downhill trek is steep and a bit dangerous, so you have to be very much careful. और अपने आप को फिसलने और लुढ़कने से बचाना है, नहीं तो आप 30 मिनट की बजाय 3 मिनट में नीचे ब्रिज पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। बहरहाल रास्ते में आपको जगह जगह छोटे ढाबे नज़र आएंगे जहां से आपको पानी, चाय और ड्राई फ्रूट्स मिल सकते हैं। तकरीबन 30 मिनट के ट्रैकिंग के बाद हम पहुंच गए इस 625 फीट लंबी और 139 फीट दरिया से ऊंचे ब्रिज पर, जिसको बोलते हैं द हुसैनी ब्रिज। सो लेट्स गो एंड सी। Wow, amazingly stunning. But what's this? The wooden planks are broken and much weaker to step on. Yes, this is the most famous Indiana Jones bridge. Everybody coming to Hunza, they want to cross this bridge because it's like testing your nerves. And if what you're looking for is adventure, just try crossing this bridge. So, testing the nerves and accepting Dare Eileen challenge. You must do it once before you die. Constructed by the brave people of Hussaini, this most dangerous bridge of the world is designed on Hunza River, and it links Abdigar to the Hussaini village. ब्रिज पर चलते हुए मुझे एहसास हुआ कि रियली इट इज़ द मोस्ट डेंजरस ब्रिज टू क्रॉस। क्योंकि वुडन प्लैंक्स इंतहाई कमज़ोर हैं और उनके दरमियान फासला भी एक जैसा नहीं है, और इस पूरे ब्रिज को इंतहाई कमज़ोर तारों से बांध के रखा गया है। और जब आप इस ब्रिज पर चलते हैं और नीचे बहता हुआ पानी देखते हैं तो आपको ऐसे लगता है जैसे पूरी ब्रिज हिल रही है। इसलिए कमज़ोर दिल वाले बिल्कुल ट्राई ना करें, नहीं तो आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है।
अगर आप कभी हुंजा शहर को आते हैं तो ये एडवेंचर लाजमी करेंगे या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।